डेवलपमेंट ऑफ आंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कौट फॉर्मेशन होची केमती फॉर्मेशन होची से सब जानिया ପାଇଁ हेले डेवलपमेंट ऑफ आंथर बुझियाटा बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज फ्रॉम आंथर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर डेवलप बट को पार्ट डेवलप होचंदी सेटा हम डेवलपमेंट ऑफ आंथर रे जानि परिबा ओके तो आंथर डेवलप्स फ्रॉम द टिप ऑफ द फिलामेंट टू डेवलप करते हैं आंथर ओके जोटा फर्दर डिफरेंशिएट है कि गोटे फोर लोब स्ट्रक्चर क्रिएट करता होची से फोर लोब स्ट्रक्चर रे आंथर वाल थाउची आंथर वाल सहित माइक्रोस्पोरेंजिया थाउची तो यहाँ हूँ आंथर बेसिक स्ट्रक्चर तो आम सम 8 पॉइंट्स पढ़ा कौन कौन अच्छी फर्स्ट द क्रॉस सेक्शन ऑफ यंग आंथर शोज ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनियस पैरेन्काइमेटर सेल्स सराउंडेड बाय एपिडर्मिस जदि आम गोटे यंग आंथर क्रॉस सेक्शन नेबा तो ये आमको शो कर ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनियस पैरेन्काइमेटर सेल्स सराउंडेड बाय द एपिडर्मिस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ होमोजेनियस पैरेन्काइमेटर सेल्स होमोजेनियस मीन सिमिलर थी पैरेन्काइमेटर सेल्स कौन पैरेन्काइमेटर्स कौन सेल्स कौन हेल्प करते से फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करते स्टोरेज रे हेल्प करते सिक्रेशन रे हेल्प करते एंड ट्रांसपोर्ट दैट इज वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करते से पैरेन्काइमेटर सेल्स आम देखू कोड़ी डेवलपिंग आंथर रे जोटा सराउंडेड होता है मास ऑफ एपिडर्मिस मेन फंक्शन कौन एपिडर्मिस मेन फंक्शन हो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस ओके second point है as the growth proceed it become four lobe structure and develop a cambial strip at the center तो as the growth proceed आंथर गोटे फोर लोब स्ट्रक्चर हो and develop a cambial strip at the center तो cambial strip गोटे डेवलप कर सेंटर से cambial strip टा फर्दर फॉर्म करुची वास्कुलर बंडल को से वास्कुलर बंडल टा डेवलप हो इन कनेक्टिव हो जोड़ा कि फिलामेंट वास्कुलर स्ट्रैंड सहित गोटे कनेक्शन एस्टाब्लिश कर कनेक्शन टा कंडक्शन रे हेल्प करुची ओके तो कनेक्टिव एमती देख कनेक्टिव वास्कुलर बंडल और वास्कुलर स्ट्रैंड टा फिलामेंट वास्कुलर स्ट्रैंड सहित गोटे कंटिन्यूटी चैनल फॉर्मेशन करुची फॉर कंडक्शन ओके देन थर्ड पॉइंट बिलो एपिडर्मिस रो ऑफ सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू 4 ग्रुप्स वन इन ईच ओके तो बिलो एपिडर्मिस रो ऑफ सेल्स मैंने डिफरेंशिएट करती 4 ग्रुप्स रे वन इन ईच लोब गोटे लोब रे ये रो ऑफ सेल्स गुड़ाक डिफरेंशिएट करती 4 ग्रुप्स रे से ग्रुप्स ऑफ सेल गुड़ाक कहुच्छी माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल्स और आर्चिपोडियम ओके से ग्रुप ऑफ सेल्स गुड़ाक कहुच्छी माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल्स और आर्चिपोडियम से सेल्स गुड़ाक केमती थाउचंती से मानकर लार्ज इन साइज तांकर कंटेंट डेंस थाउची एंड आउ कौन से मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रेडियली एलोंगेटेड थाउचंती ओके ए ग्रुप ऑफ सेल्स गुड़ा कौन कहुच्छी माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल्स और आर्चिपोडियम ओके दीज लेयर्स ऑफ इनिशियल्स मे बी वन और मोर ए माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल्स मे बी गोटे पारती कि गोटे अधिका भी हो पारती फिफ्थ नंबर पॉइंट ईच माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल्स और द आर्चिपोडियम सेल्स डिवाइड्स इन ईच लोब बाय पेरिक्लिनल डिवीजन कौन 180 डिग्री डिवीजन होता है डिवाइड 2 लेयर फॉर्मेशन करती दैट इज आउटर प्राइमरी सेल वॉल और ओके से पेरिक्लिनल डिवीजन करके 2 लेयर फॉर्मेशन करती जोटा हूँ आउटर प्राइमरी सेल वॉल और पैरेटियल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स ओके जो आउटर प्राइमरी सेल वॉल अच्छी और पार्ट्स पैरेटियल लेयर अच्छी से लेयरटा द सेल ऑफ द प्राइमरी पैरेटियल लेयर बिलो द एपिडर्मिस undergoes periclinal and anticlinal division forming 3 to 5 concentric layer of secondary parietal layer okay the primary parietal layer below the epidermis कौन करछि undergoes जाउछि a series of periclinal and anticlinal divisions जाउछि forming 3 to 5 concentric layer of secondary parietal layer तो प्राइमरी पैरेटियल लेयर ही एपिडर्मिस रे सीरीज ऑफ डिवीजन जोड़े पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन जाकि सेकेंडरी पैरेटियल लेयर को फॉर्मेशन करूचंती which secondary parietal layer along with epidermis form anther cell wall okay anther wall layer और anther cell wall हला secondary parietal layer epidermis सहित मिसिकी anther cell wall formation करूचन सेटा कोन first that is endothelium second that is 1 2 3 middle layer and the last tapetum innermost tapetum हला then next point primary sporogenous cells undergoes several division to form the secondary sporogenous cells before functioning as the microspore mother cell okay it is our most important point these 2 points are most important point primary
पार्शियल लेयरटा कौन हो एंड प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल लेयरटा से लेयरटा कौन हो तो प्राइमरी पार्शियल लेयरटा सेकेंडरी पार्शियल लेयर फॉर्मेशन करछि एलोंग विथ एपिडर्मिस सेमाने एंथर सेल वाल लेयर्स गुडा फॉर्मेशन करछन्ती एंड प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स लेयरटा जोटा थाउछि सेटा अंडरगो सेवरल डिविजन्स जाइए से सेकेंडरी स्पोरोजिनियस सेल्स फॉर्मेशन करछन्ती जोटा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रे फंक्शन करछि सम केसेस रे प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स फंक्शन डायरेक्टली एज माइक्रोस्पोरोसाइट्स को कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ओके तो केते बड़ा केस रे सेकेंडरी स्पोरोजिनियस सेल्स फॉर्मेशन न होके से जो डिविजन्स न करके डायरेक्ट प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स गुडा फंक्शन डायरेक्टली एज द माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल ओके लास्ट पॉइंट माइक्रोस्पोर मदर सेल along with special callous wall along microspore mother cell along with special callous layer undergoes meiosis रे जाके से माने म्यूस्पोर फॉर्मेशन करांती म्यूस्पोर फर्दर टू टाइप्स रे थाउची गोटा होची माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स माइक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स हमरे मेल गैमेटोफाइट्स फॉर्मेशन करूछंती एंड मेगास्पोर्स हमरे फीमेल गैमेटोफाइट्स फॉर्मेशन करांती ओके तो म्यूस्पोर्स जनरल कोन म्यूस्पोर्स होची गोटे हैप्लॉइड स्पोर्स हैप्लॉइड मीन्स जनरली एन ओके आउ गोटे टर्म अच्छी म्यूस्पोर्स सहित माइटोस्पोर्स जनरली ये म्यूसिस हला परे म्यूस्पोर्स होता माइटोसिस हला परे माइटोस्पोर्स फॉर्मेशन होता माइटोस्पोर्स जनरली मे बी से हैप्लॉइड हो पारती और डिप्लॉइड हो पारती इन नेचर ओके हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इन नेचर एंड से फंक्शन कौन था आ गोटे हाँ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड था एन एंड 2n होती एंड से म्यूसिस फॉर्मेशन होता है सॉरी से माइटोसिस फॉर्मेशन होता है म्यूसिस फॉर्मेशन होता कौन म्यूस्पोर्स एंड माइटोस्पोर्स ओके देन आम गोटे फ्लोचार्ट देखीदा जनरली कौन कौन होता है अनडिफरेंशिएटेड एंथर सेल वालटा फर्स्ट एपिडर्मिस एंडर आम कौन था आर्चिपोडियम ओके आर्चिपोडियम फॉर्मेशन होता है एपिडर्मिसटा इनिशियल एपिडर्मिसटा फुल्ली डेवलप एपिडर्मिस को फॉर्मेशन करता है देन आर्चिपोडियम और द माइक्रोस्पोरेंजियन इनिशियल्स कौन करता है सी फर्दर पेरिक्लियन डिवीजन रे टू पार्ट्स रे डिवाइड होता है दैट इज प्राइमरी पार्शियल लेयर एंड प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स ओके तो प्राइमरी पार्शियल लेयर टाइम सेकेंडरी पार्शियल लेयर होता है जोटा कि एपिडर्मिस सहित मिसिकी फर्दर एंथर सेल वाल को फॉर्मेशन करता है और एंथर वाल लेयर को फॉर्मेशन करता है दैट इज एंडोथेसिया मिडिल लेयर एंड टापेटम देन प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्टा सेकेंडरी स्पोरोजिनियस ओके प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्सटा सेवरल डिविजन्स अंडरटेक सेवरल डिविजन्स स्पोरोजिनियस सेल्स आफ्टर सेवरल डिविजन्स मैंने सेकेंडरी स्पोरोजिनियस सेल्स फॉर्मेशन करते जोटा माइक्रोस्पोरोजिनियस मदर सेल्स फॉर्मेशन करते ओके एंड मेनी केसेस रे प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स डायरेक्ट स्पोर फॉर्मेशन करती माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय मियोसिस से स्पोर्स गुड़ा कह मियोस्पोर्स जदि से गुड़ाक मियोसिस रे न होकि माइटोसिस रे फॉर्मेशन करती से स्पोर्स गुड़ा कह माइटोस्पोर्स नेक्स्ट आम पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ पोलन तो आम ए जानते कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कोड फॉर्मेशन करते तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ पोलेन्स तो यार बेसिकली मु 8टा पॉइंट कर देगी 8टा पॉइंट्स रे हम देखिदेबा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन एंड द फॉर्मेशन ऑफ पोलेन्स कौन स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिनेशन होची माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलेन्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल आम ए जस्ट पढ़ले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कोड फॉर्मेशन होची माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्मेशन होची सेकेंडरी स्पोरोजिनियस सेल्स रो जोटा कि प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स रो फॉर्मेशन होता होची एंड प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स आर्चिपोडियम रो फॉर्मेशन होता होची तो जनरली एटा भी कहा होची कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जनरली आर्चिपोडियम रो फॉर्मेशन होता होची तो डेफिनेशन गला इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलेन्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो सेकंड पॉइंट होची each microspore mother cell become enclosed in an callous wall and divide by meiosis from haploid uninucleated microspores or pollen in each microsporangium. In some cases, the MMC, that is the microspore mother cells, remain unfunctional and serve as nutritive material for the functional microspore mother cells. So each microspore mother cell become enclosed in a callous wall. So callous wall enclosed होता है. Suppose this is the माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जोड़ा कि गोटे कैलस वॉल भितर एनक्लोज होता है एंड डिवाइड बाय मियोसिस रे डिवाइड होगी टू फॉर्म हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोर्स से हैप्लॉइड दैट इज द एंड
haploid uninucleated microspores or pollens. The microspore mother cell ru basically 4 microspores formation हुआ one microspore mother cell ru. Okay, callous wall formation करे था in divides by meiosis to form haploid uninucleated microspores or pollen in each microsporogium. Some cases रे कौन होची आमे just अभी पढ़ते लिखी microspore mother cell कभी भी वन सेल न था मैंने यूनिवर्सली गोटे न था मे बी वन और मोर गोटे ही पारती कि गोटे अधिका ही पारती तो सम केसेस जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स गोटे अधिका था तो गोटे माने जोड़ा फंक्शनल है न था जो माइक्रोस्पोर फंक्शनल है न था सी अनफंक्शनल हो जाए और सर्व एज ए न्यूट्रिटिव मटेरियल मे बी वन और टू से गोटे कि दीटा अनफंक्शनल हो पारती बट फंक्शनल गोटे रहा बाध्य माइक्रोस्पोर मदर सेल्स गोटे फंक्शनल थी सपोज 3 नंबर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अच्छा जो मैंने भर दीटा होती अनफंक्शनल वन इज फंक्शनिंग तो दीटा जोड़ा अनफंक्शनल से न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करती ओके then third number हम कहले one microspore mother cells divided into 4 microspores यार फिगर्स हमें देखि देबा केमती कोन होची तो एडा होची microspore mother cell having one nucleus microspore mother cell तो तार फर्स्ट स्टेज रे होची सी को डिवाइड करछि सी मियोसिस रे डिवाइड करले तार फर्स्ट डिवीजन होची सी डायर स्टेज आछि डायर स्टेज पारे से 3 डिविजन्स जाउची that is the tetrads sorry 4 division जाउची that is the tetrads रे that is the 4 division this is the 2 division. So after 4 divisions he either A form रे रही परिबो नॉट the cleavage of the protoplast take place protoplastic cleavage of the protoplast माने cleavage होची splitting cleavage रे मीनिंग होची splitting the protoplasm split हे जबे in form the pollen grain the protoplasm एटी split हे जाई छि split हे की सी pollen grain formation करछि then एडा भी गोटे माइक्रोस्पोर जोड़ी के 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल रू गोटे 1 मदर सेल रू 4 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होइछंती 1 2 3 4 दैट इज द पोलन ग्रेन्स विथ एक्साइन इन इंटाइन ए पोलन ग्रेन्स रे जगह रे होची एक्साइन दिस इज द इंटाइन मैं देखा दिस इज द एक्साइन इंटाइन एंड दिस इज द न्यूक्लियस हमें फोर्थ स्टेज आसो फोर्थ पॉइंट को आसो फोर्थ पॉइंट होची at meiotic stage a large number of pollen mother cell in an anther lobe due to massive cytoplasmic channel joining one cell over the other PCMs कौन PCM होची pollen mother cell. This synchrony is maintained till the end of the first meiotic division. तो जते बेले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स गुड़ाक लार्ज नंबर आंथर लोब रु बाहर था आंथर लोब रु बाहर की ड्यू टू मैसिव साइटोप्लाज्मिक चैनलिंग जेहेतु गोटे लार्ज नंबर से आसती गोटे मैसिव साइटोप्लाज्मिक चैनल फॉर्मेशन ही था जो चैनल रु वन सेल ओवर द अदर पेशेंट मैंने गोटे सेल आउ गोटे सेल एमती था जेहेतु ड्यू टू द मैसिव साइटोप्लाज्मिक चैनल एटा गोटे सिंक्रोनी मेंटेन करता है जो सिंक्रोनी केते जगह मेंटेन होता है टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से सेल्स गुड़ाक जो पीसीएम्स रे था एक्चुअली ये हूँ पोलन मदर सेल PMC become independent in growth through meiosis as an isolated cells. तो एबे जो PMC माने पोलन मदर सेल गुड़ाक जोड़ा जॉइन होती जॉइनिंग वन ओवर अदर सेल्स माने इंडिपेंडेंट हो जाती एंड आइसोलेटेड सेल हो जाती तो एबे से ईच डॉटर से पेरेंट पोलन सेल मदर सेल्स रू एबे से डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होती मियोसिस द्वारा तो एबे ईच डॉटर सेल्स इज नाउ हैप्लॉइड मीन्स N. फोर्थ पॉइंट आम पढ़ा साइटोकाइनेसिस बेसिक मीनिंग कौन साइटोकाइनेसिस मीन सेल डिवीजन तो आम फर्स्ट स्टार्टिंग पढ़ी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चारिपटे कैलस वाल फॉर्मेशन होती ड्यू टू द वाल फॉर्मेशंस डॉटर सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर साइटोकाइनेसिस द्वारा जो वाल फॉर्मेशन होती से वाल फॉर्मेशन डिवाइड होगी डॉटर सेल फॉर्मेशन करते परस्पर अलग था सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू साइटोकाइनेसिस दैट इज द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन टू टाइप्स होची गोटे होची साइमल्टेनियस टाइप्स आउ होची सक्सेसिव टाइप साइमल्टेनियस टाइप रे कोन होची सेल वॉल केमती फॉर्मेशन होची ए सेल वॉलटा सेंट्रीपेटल मैनर रे फॉर्मेशन हिता होची एंड सक्सेसिव टाइप रे सेल वॉलटा केमती फॉर्मेशन हिता होची सक्सेसिव टाइप रे सेल वॉलटा सेंट्रीफ्यूगल रे फॉर्मेशन हिता होची तो हम ए बेसिक डिफरेंस जान देबा सेंट्रीपेटल कोन और सेंट्रीफ्यूगल कोन एटा पिला माने बहुत कंफ्यूजन हितांती सपोज दिस इज द सेल एंड दिस इज द सेंटर जदि एठू सेल वॉल फॉर्मेशन हम टुवर्ड्स द सेंटर जदि टुवर्ड्स द सेंटर सेल वॉल फॉर्मेशन होची तो ताको सेंट्रीपेटल कह होची ताको सेंट्रीपेटल कहछि जदि सेंटर रु आवे माने बाहर को होची भीतर बाहर को फॉर्मेशन होची सेटा कह होची सेंट्रीफ्यूगल तो एती मन रथवा पेटल्स मीन्स सेंट्रीपेटल्स मीन्स टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीफ्यूगल्स मीन्स अवे फ्रॉम सेंटर. तो हमें फर्स्ट टाइप पढ़ा दैट इज साइमल्टेनियस टाइप रे सेल वॉल फॉर्मेशन होची साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन हम बिटवीन 4 न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द सेकंड माइटोटिक डिवीजन रे 4 न्यूक्लियाई से फॉर्मेशन करिवो केमती फॉर्मेशन करिवो सेंटीमीटर मैनर करिवो एंड साइमल्टेनियसली हबो जो साइमल्टेनियसली टाइप रे सेल वॉल फॉर्मेशन होची सिर्फ 4 डॉटर सेलटा अरेंज हेता होचनी को मैनर रे टेट्राहेड्रल मैनर रे जॉइन हेता होचनी फॉर्मिंग ए स्पोर टेट्राड से माने स्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करी की टेट्राहेड्रल मैनर रे
फॉर्मेशन करता तो ये मेन पॉइंट कौन मन रखिए साइमल्टेनियस टाइप रे सेल वाल फॉर्मेशन होची हम सेंट्रीपेटल मैनर रे केमती फॉर्मेशन होची साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन होची 4 न्यूक्लियर फॉर्मेशन है कि सेकंड म्यूटेटिक डिवीजन रे फॉर्मेशन होची 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होची अरेंज होचंती को फॉर्म रे टेट्राहेड्रल मैनर रे होचंती गोटे टेट्राहेड स्पोर फॉर्मेशन करचंती ओके देन सक्सेसिव टाइप रे सेमती सेल वाल केमती फॉर्मेशन होची एंड इट्स कॉमनली फाउंड इन डाइकॉट्स कोडा साइमल्टेनियस टाइप टा कोडी होची डाइकॉट्स रे होची एंड सक्सेसिव टाइप टा फॉर्मेशन होची मोनोकॉट्स रे सेल वाल केमती फॉर्मेशन होची फर्स्ट सेल वाल फॉर्मेशन occurs between two daughter cell nuclei at the end of the meiosis one this extends centrifugally to form two daughter cells तो एटा साइमल्टेनियसली चारटा डिवीजन होनी ओके साइमल्टेनियसली दीटा डिवीजन होनी ओके माने संगे संगे दीटा माइटोटिक डिवीजन होनी फर्स्ट रे गोटे डिवीजन होची दैट इज द meiosis 1 रही कि टू डॉटर सेल फॉर्मेशन होचंती तापरे दिस एक्सटेंड सेंट्रीफ्यूगल से माने एक्सपैंड कर गले सपोज फर्स्ट डिवीजन ही साला परे सेंट्रीफ्यूगल माने अवे फ्रॉम द सेंटर से माने सेंटर रु दूर को पळेला परे सेंट्रीफ्यूगली आउ गोटे डिवीजन है कि से माने 4 टेट्राइड फॉर्मेशन करंती एटा सब मन रखि थाओ ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म 4 टेट्राइड जहां भी हो से माने चारटा टेट्राइड ही तैयारी करबे ओके सेम केसेस रे डायड से माने थांती सेटा में परे पड़िबो तो बेसिकली मैं सक्सेसिव टाइप रे पढ़छि सेल वाल मोनोकॉट्स रे देखा होछि तार फर्स्ट सेल वाल फॉर्मेशन occurs between two daughter cell nuclei at the end of the meiosis one होछि this extends centrifugally to form two more daughter cells तो जो nucleus of each daughter cell divides into two nuclei into the second mutated division which is followed by wall formation between the nuclei सेकंड म्यूटेटिक डिवीजन रे वाल फॉर्मेशन होछि बिटवीन द न्यूक्लियाई फर्स्ट डिवीजन रे डॉटर सेल डिवाइड हो जाउछन्ती सेटा सेंट्रीफ्यूगली से एक्सपैंड करूछि देन ईच डॉटर सेल रे आउथरे जो सेकंड म्यूटेटिक डिवीजन हो से जगह रे वाल फॉर्मेशन होछि एटा साइमल्टेनियसली हे जाउतला वाल फॉर्मेशन बट याथरे रही कि गोट माने फर्स्ट डिवीजन हे साला परे से सेंट्रीफ्यूगली एक्सटेंड हे कि डिवीजन होछि तो फाइनल रिजल्ट कोन आछि फॉर्मेशन ऑफ ए टेट्राइड सेल इन व्हिच द न्यूक्लियाई लाई इन वन प्लेस तो आम से पढ़ी कि जो 4 डॉटर सेल अरेंज को मैनर ही था टेट्राहेड्रल मैनर ही था तो सक्सेसिव टाइप रे कौन होता है जो टेट्राइड सेल फॉर्मेशन ही था से माने कौन करते हैं गोटे जगह गोटे वन प्लेस रे रही जाते हैं तो से आइसोबायलेटरल टेट्राइड से माने फॉर्मेशन करंती 7 पॉइंट आछि अदर टाइप्स ऑफ टेट्राइड अदर टाइप ऑफ टेट्राइड कौन कौन अछि फर्स्ट होछि लीनियर टेट्राइड सेकंड होछि टी शेप टेट्राइड तापर होछि डेरिसेट टेट्राइड ओके हम जो फर्स्ट पढ़ले टेट्राहेड्रल टेट्राइड जोड़ा सक्सेसिव टाइप रे आस्था होछि सक्सेसिव टाइप सेल फॉर्मेशन रे आस्था होछि एट केमती होछि देखो 1 2 3 एटा होछि तार सेल वाल फॉर्मेशन हिछि सेकंड टेट्राइड दैट इज आइसो बायलेटरल टेट्राइड फर्स्ट डिवीजन हला देन से माने सेंट्रीफ्यूगली एक्सटेंड कले सेंट्रीफ्यूगल एक्सटेंड हला पर सेकंड डिवीजन ही गला ओके तो फर्स्ट डिवीजन हला पर टू डॉटर फॉर्मेशन हेले देन से माने सेंट्रीफ्यूगली एक्सपैंड कर सला पर आउ दीटा डिवीजन हला दीटा डिवीजन के चारटा डॉटर सेल से माने फॉर्मेशन कले देन देयर इज अ लिनियर एंड टी शेप लिनियर सब जगह गोटे लाइन रे अछि टी शेप ता फॉर्मेशन टी शेप रे हिछि ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके last point all the 4 spore in the tetrad get completely isolated from one another spore tetrad of the pollen sac तो जतल से आउरी फुल्ली डेवलप कर जिवो ए सब जो चारटा टेट्राड फॉर्मेशन हिजे टेट्राड जो स्पोर फॉर्मेशन करचंती चारटा स्पोर करचंती ईच स्पोर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हे जिवो ओके एंड एटा को फैमिली को बिलोंग माने देखा होची जनरली देखा होची हैलोपिथ कोडा देखा होची लीनियर टेट्राड एंड आ सब जगह बुक्स रे नहले नेट सर्च कर देबो डिफरेंट एग्जांपल्स एकोडा करो Second point, they set free in the anther locus by the breakage of the common callous wall or the cell wall. से माने कोडी फ्री थांती anther locule फ्री हे जाइतांती by breaking the cell wall. Okay. Last, the microspore develops wall and other features to become matured pollen grain, which will be discussed later. टॉपिक वासे फोर्थ टॉपिक होची callose deposition and its significance. The first तार definition कोन callose is a plant polysaccharide composed of glucose residues linked together by beta 1,3 linkage and called as beta glucan. The definition कोन callose is a plant polysaccharide composed of glucose residues linked together by beta 1,3 linkage and called as beta glucans. Callose गुडा कोन को होची beta glucans तांको अदर नेम तार होची beta glucans and से गुडा कोन से माने होची plant polysaccharide composed of glucose से माने plant polysaccharide जोडा के glucose रे composition रही थांती आ से माने link together थांती से together से माने मिसी थांती को bond formation कर को linkage रे से माने link थांती beta 1,3 linkage रे the main तीनटा पॉइंट मन रखियो से गुडा plant polysaccharide glucose composition रे थाउची link कोथरे होची beta 1,3 linkage रे थाउची आ से माने को otherwise को होची beta glucans okay ये मैन्युफैक्चर कोडी होची मैन्युफैक्चर एट द सेल वॉल बाय callosynthesis एंड डिग्रेड्स कर जाउची बाय beta 1,3 glucanase ओके callose गुडा को मैन्युफैक्चर कोडी होंती सेल वॉल बाय callosynthesis को प्रोसेस द्वारा callosynthesis द्वारा सेल वॉल से माने मैन्युफैक्चर ही थांती डिग्रेड कर जांती बाय beta 1,3 glucanase एटी के मन रखियो जिंस ए गुडा को टी मन रखि थिबो हला डेफिनेशन गुडा कने पॉइंट्स गुडा को सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय मैंजिन 100 years ago आघुरु
मैंजीन फर्स्ट कैलोस को आइडेंटिफाई करते लैटर आइडेंटिफाइड एज कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल रे जो आइडेंटिफाई है कि आइडेंटिफाई करते फ्रे वेस्लिंग एंड मुहेलथर ए कैलोस गुड़ाक मेजर रोल फॉर्मेशन सॉरी मेजर रोल प्ले करते इन द प्लांट डेवलपमेंट स्पेशली इन रिप्रोडक्शन बहुत हेल्प करती कैलोस गुड़ाक Third point, before meiosis, all the PMC, that is the pollen mother cell, looks like somatic meristematic cells. Okay, being surrounded by a typical cellulose wall. तो ସେମାନେ तार look केमती थाउची PMC रे, that is the pollen mother cell रा somatic meristematic cell थाउचंती surrounded केमती थाउचंती by a typical cellulose wall. एमिति गोटे formation ही थाउचंती जोड़ा को somatic meristematic cell बोली कहै थाउ. जो connected by थाउचंती plasmodesmata. Plasmodesmata कौन? Plasmodesmata is a narrow thread of cytoplasm that passes through adjacent cell wall and keep communicating between PMCs. तो प्लाज्माडेस्माटा हूँ गोटे नैरो थ्रेड ऑफ साइटोप्लाज्म गोटे मैंने बहुत सरू लिंकटा दैट पास थ्रू एडजेसेंट सेल मैंने पाखे पाखे जो सेल थी से सेल द्वारा से पास करते कौन पे फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द पीएमसी दैट पोलन मदर सेल कम्युनिकेशन करने प्लाज्माडेस्माटा बहुत हेल्पफुल करता है प्लाज्माडेस्माटा क्या जॉइन करता है पोलन मदर सेल को जॉइन करता होती पोलन मदर सेल लुक्स कौन था सोमेटिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स था सराउंडेड ही था टिपिकल सेलुलस वॉल द्वारा ओके Fourth point है callose start deposition with the initiation of meiosis. This is an important point. Question as per callose केते बेले तार deposition start होते callose deposition केते start होते the initiation of meiosis जब start होते callose deposition भी से समय रे start हो जाता है तापरे it get deposited between the plasma membrane and the cell wall of PCMs plasma membrane and PMC भितरे sorry PMC भितरे जो cell wall था होची से in between space था होची से जगह से मैंने deposition start ही थांदी केमती deposition ही थांदी by breaking the cytoplasmic connection कोडा plasmodesmata हम जोड़ा पढ़ले जोड़ा formation कोडी होची between the PMC tapetal cell innermost layer and the anther ए भितरे जो connection था होची cytoplasmic connection से formation कहाँ द्वारा था होची plasmodesmata द्वारा ही था होची between the tapetum and the PMC then जो callose deposition था होची से continue कोडी होची through meiosis so product of the meiosis is the microspore tetrad ने करता होची through meiosis so the product of the meiosis रे product कौन ही था होची MMC रो product as था होची microspore tetrad तो से microspore tetrad गुड़ा कभी surround ही जानती surrounded by a dense callus तो जेहेतु सेटा कौन की cell रो tapetal cell innermost layer of the anther and PMC भितर से डिपोजिशन स्टार्ट ही था जो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन ही था से भितर भी कैलोस डिपोजिशन गुड़ा डेंस ही था ओके तो जो प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस रे माइक्रोस्पोर चारिपटे भी डेंस कैलोस वाल फॉर्मेशन ही था देन आफ्टर मियोसिस कौन ही था आफ्टर मियोसिस इट ब्रोकन डाउन बाय कैलोस एंजाइम एक्टिविटी जो कैलोस एंजाइम एक्टिविटी ही था जिससे सिक्रेटेड बाय टैपेटम रिलीज फ्री स्पोर फ्रॉम द सैक जो कैलोस एंजाइम एक्टिविटी ही था से कौन करता जो स्पोर गुड़ा आम पढ़ी जो इंडिपेंडेंटली से फ्री हो जी से केमी बाय द ब्रेकिंग ऑफ द कैलोस वॉल ब्रोकडाउन हो ब्रोकडाउन केमी हो कैलोस एंजाइम एक्टिविटी द्वारा हम कैलोस एंजाइम एक्टिविटी द्वारा हम जो कैलोस एंजाइम एक्टिविटी सिक्रेटेड कोड हो टैपेटम हो तो बेसिकली जो आमर माइक्रोस्पोर मदर सेल वाल ब्रेकडाउन किए करता है टैपेटम केमी करता है कैलोस एंजाइम एक्टिविटी गोटे माने प्रोसेस अच्छे से एक्टिविटी गुड़ाक द्वारा एंजाइम्स कैलोस एंजाइम के था से एक्टिविटी करती से वाल गुड़ाक डिवाइड करती ब्रेकडाउन हेल्पफुल करती ओके आफ्टर दैट टैपेटम जो रिलीज करते हैं कैलोस एंजाइम कैलोस वाल ब्रेकडाउन होगी इट रिलीजेस फ्री फ्लो फ्रॉम द सैक तो पोलन सैक भीतर फ्री स्पोर्स गुड़ाक फॉर्मेशन होता है देन सिग्निफिकेंस और द इंपोर्टेंस ऑफ द कैलोस डिपोजिशन तो ये डिपोजिशन कौन पाई होता है बेसिकली तार इंपोर्टेंस कौन और सिग्निफिकेंस कौन तो यहाँ बेसिकली अच्छी 10टा पॉइंट ओके तो स्टार्ट पढ़ियो The callus will not only isolate the sporogenous tissue from the somatic tissue but also individual microspores. It gives mechanical isolation to the developing microspores, thereby preventing cell correlation. सेपरेट कर स्पोरोजेनियस टिश्यू सोमेटिक टिश्यू एंड माइक्रोस्पोर जो इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर को से सेपरेट कर कौन कर इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर को गोटे आइसोलेशन मेकानिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर बाय प्रिवेंटिंग सेल कोहेरेशन एंड by rapid and total dissolution set the microspore free तो at last कौन कर कैलोस सेल जो ब्रेकडाउन आम जो पढ़ले आफ्टर मियोसिस कौन हो इट ब्रोकन डाउन बाय कैलोस एंजाइम एक्टिविटी जो कैलोस एंजाइम एक्टिविटी टैपेटम द्वारा है कि जो स्पोर गुड़ा फ्री होती से केमती होची सेटा होची तार प्रथम सिग्निफिकेंस कहार कैलोस डिपोजिशन ही कौन होची से सेपरेट कर कोडा स्पोरोजेनियस टिश्यू सोमेटिक टिश्यू एंड इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर को कौन कर से गोटे मेकानिकल आइसोलेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर बाय प्रिवेंटिंग कोरिलेशन माने पाखे पाखे न रही दूरे दूरे करके रखुची ओके सेकंड पॉइंट कौन सेकंड पॉइंट Callose deposition also function as a kind of chemical isolation, establishing a selective barrier between the genetically different haploid cells and the sister spore or the adjacent spore. तो से haploid genetically different जो haploid cells अच्छी तार और the sister spore भितर गोटे chemical isolation formation करी गोटे selective barrier से formation करची कौन callose deposition गोटे selective barrier formation करची का भितर genetically different haploid cells and its sister spores भितर वो स्टेज रे से करची या कौन हेल्पफुल होची डिफरेंट हैप्लोइड स्पोर्स गुड़ाक डिफरेंट हैप्लोइड स्पोर्स गुड़ाक तांकर डेवलपमेंटल स्टेज टाको अनएक्सपोज्ड और
इन्फ्लुएंस्ड अनइन्फ्लुएंस्ड वे रे से कंप्लीट कर पारछन डेवलपमेंट स्टेज को इजीली कंप्लीट कर पारछन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिस्टर स्पोर और द एडजॉइनिंग स्पोर्स. ओके. थर्ड पॉइंट, Heslop and Harrison viewed that callose not only act as a molecular filter or barrier but also provide genetic autonomy. Genetic autonomy कौन? Right condition for self development. Genetic autonomy होची right condition for self development to each developing sporocyte. Each developing sporocyte को Heslop and Harrison कौन कहले कि callose not only provide a molecular filter or barrier but also provide genetic autonomy, the right condition for the self development of each developing sporophyte. Okay. Fourth number point कौन? It protects the developing sporophyte from harmful hormonal and nutritional influence of adjacent somatic cells. Same आज जोड़ा कहले जो से barrier formation कर दूची से barrier formation द्वारा कौन helpful होची? It protects the developing sporophyte from harmful hormonal and nutritional influence of the adjoining somatic cells or the sister spores. Okay, sister spores or cells. Fourth point गला. Fifth point, it also protects from dehydration. It also helps the callose deposition or also protects the cells from the dehydration even though drought in the environment, as callose have the ability to absorb and retain water. Callose जेहेतु callose ability अच्छी to absorb and retain water even the drought condition, environment रे drought condition थिले भी से dehydration हेबा को दोनी. It protects from dehydration as the callose have the ability to absorb and retain water. Okay, this is a very useful quality of callose deposition. Then sixth point of callose act as a source of carbohydrate for developing microspores after breakdown. The solution carbs used in metabolism during their development. The callose आउथरे कौन करे आमे nutrition से provide करूची, dehydration से help करूची, dehydration हेबा को दोनी, dehydration help नहीं, dehydration से protect करूची. It also act as a source of carbohydrate for the developing microspore after the breakdown of the soluble carbs. Soluble carbs breakdown ପରେ ये गोटे बहुत important source of carbohydrate और the important source of callose गोटे important source of carbohydrate का पे play करूची, developing microspore पे से play करूची केतेले after the breakdown of soluble carbs used in the metabolic activity during the development. तो microspore developing activity चलता होची, metabolic developing activity चलता होची से समय रे ये गोटे source of carbohydrate provide करूची. 7th point, lack of callose deposition. जेतेबेले callose deposition लैक थाए माने कम थाए से कौन होता है था से डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी को लीड करता होची, मेल स्टेरिलिटी को से लीड करता होची. ओके. 8 नंबर पॉइंट, callose plays an important role in the formation of exine on the pollen wall. Lack of callose deposition or callose formation thin the exine wall in pollens. तो पोलेन रो आउटर वॉल को कहा होची exine wall से जो exine wall दा बहुत पुअरली डेवलप थिन था होची जदी callose रो formation और deposition properly हे न था होची. ओके. 8 नंबर पॉइंट. 9 नंबर पॉइंट, it gives pattern to the aperture of pollens. पोलेन रो आउटर aperture को से पैटर्न प्रोवाइड करता होची. The position of aperture is correlated to the last point of the callose deposition. The callose deposition रे last point of pollen रे aperture pattern and position aperture pattern and position को determine करता है. 10 and the last point, multiple genes जोड़ा होची GSL1 and GSL5 are necessary in the pollen development and also the formation of the callose wall. तो multiple genes जो अच्छे से pollen development and pollen formation जो pollen development and also in the formation of callose wall रे बहुत helpful करता होची multiple genes ए दुईटा GS1 and GS5. नेक्स्ट आमे पढ़िबा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कौन एंड पोलेन बायोलॉजी.